You cannot live without a lawyer, and certainly you cannot die without them. Said by Joseph Hawkes, the famous American lawyer and diplomat. A very good morning to one and all. On behalf of IPM Law Academy, I, Manjusha KV, Assistant Professor of Law, extend my warm welcome to one and all presented here for the webinar on Contemporary Challenges and of Legal Education, organized by IPM Law Academy, Ghaziabad. IPM Law Academy is NAC accredited and affiliated to Chaudhary Charan Singh University, Meerut. It is approved by Bar Council of India and offers LLB 3-year and BA LLB 5 years and BCom LLB 5 years programs. The vision of IPM Law Academy is to produce professionals who would pioneer future revolutions. IPM has emerged as the epitome of world-class education and imparts value-based education. We amalgamate curiosity and dedication to ensure that all our students are self-driven towards learning. The college serves as an innovative center to focus on imparting knowledge through wide exposure and frequent research and scholarships. Focusing on innovation and discipline, the college has received accreditation for being the best college in India, especially in Delhi NCR region. Law is important to society as it serves its citizens as a norm of conduct. Legal education serves society liberally by imparting general and cultural education to law students, making them good law-abiding citizens. The legal profession in India has reoriented itself. It has immense potential to ambitious and hardworking lawyers. Today, we have our eminent speaker, Advocate Rajkumar, to impart us more knowledge on the scope of legal education. Before we begin with the enlightening and communicative session, I would like to invite Dr. Meenakshi Tomar, Principal, IPM Law Academy, to give the opening remarks and to deliver welcome address. Over to you, ma'am. Thank you, ma'am. A very good morning to one and all present here. It is matter of great honor and pleasure for us, for me to welcome you all, and especially our eminent speaker, Mr. Rajkumar, Advocate Supreme Court, who spent the time out of his busy schedule and enlightened the thought of our students and attendees. Contemporary changes and of legal education. Keep once again where all the students, colleagues, and center of the attraction. Welcome all for the webinar. Welcome you all. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Now I would like to invite our eminent speaker, Advocate Rajkumar, to enlighten the participants on the importance of legal education. Advocate Rajkumar had completed his BA Political Science in 1993 and LLB in 2001 from University of Delhi. In 2011, he did LLM from Global Open University, Nagaland. He is a practicing advocate since 2001 in Supreme Court of India and Delhi High Court. Since 2011, he is a standing counsel for Central Pollution Control Board. Presently, he is the treasurer of National Green Tribunal, Bar Association, New Delhi. He is also holding the political post as state co-convener, Legal Cell, BJP, Delhi State. He is handling civil as well as criminal cases, more particularly cases relating to environmental issues at district courts in Delhi and NCR. High Court of Delhi, Supreme Court of India, NCLT, NGAT, DRT, Consumer Commissions at District, State, and NCDRC. He is also Senior Panel Counsel for Union of India,
Delhi High Court, Standing Council of NHAI, Panel Council of DPCC, PNB, ESI, Delhi University and Skoda Auto Private India Limited, and many more. Sir, you are the ideal person to encourage and motivate our participants to take law as their career. Over to you, sir. Good morning to all, and all the eminent person and the students and the other viewers are welcome in this program. And thanks to the college authorities to give me this opportunity to present myself before you all, the coming lawyers and the future of the India. Today, the topic which has been given to me is the challenges. Those are contemporary and the legal education. So, the legal education is not the new topic in India. It is the ancient part of the Indian legal system. If we read the Indian history, then we can easily found in the Indian legal system which were the traditional and available in the Smritis and the Mimamsas. The Mimamsas are the commentaries of the legal system which was available at the various stages in the society to redress the issues between the members of the society, whether they are related with the family disputes, property disputes, or the disputes related with the business and trades. So the old system in India is altogether different, which is available today. There was no concept of the advocates or the vakils. There was system of the dharma. The dharma, जो आज भी हम भारतीय संस्कृति में मानते हैं कि धर्म जो है वो सबसे ऊपर है, तो इंडियन लीगल सिस्टम was completely based on the dharma, and the king is the supreme power and having the command over the law, and his words are the command of the law. That was available at that time, but gradually the Indian legal system changed when the invaders come to India. The Indian education system also changed. They imposed their own conditions on own philosophies, on mechanism of the redressal of the dispute between the parties. The religious textbooks which are available, those can easily explain what was the legal system. The Maurya period was the one of the best period in the Indian system, where the laws and the society both are connected to each other. The rule of law was imposed by way of the ruler, and at the time ruler was the king. The king is the custodian of the all laws and regulate the society. As well as in the Vedic period, the position was the same. The Raja was the custodian of the law, and he has to protect the entire society to keep the harmonious relationship between the society and redress the issues at the minimal cost. Once the Mughal call was started,
And in the Mughal period, the system entirely changed. There was a system of the punishment. चोर के लिए हाथ काट दो, किसी ने मर्डर कर दिया तो उसको फांसी पे लटका दो. इस this kind of the system was there, and when the people were residing in the society, there was no facility to educate the people with regard to their legal rights, because the invaders only has to impose their own laws, own mechanism, instead of which was followed by the society since centuries. And after that, the British period started. And in the British period, entire law was changed, which was enacted in the England, in the British Parliament, and they started enhancing the scope of that laws to India also. When they started the enactment of the laws in the British Parliament, then they started imposing that laws in India by extending their jurisdiction. And thereafter, they exclusively passed the laws for the purpose of Indian community and Indian society. When they studied the entire mechanism of the society, how the peoples are living in India, because the entire culture are different to the British, those are living in the British era. But the Indian system is quite different, because the dharma is the primary and foremost and the supreme place in the society. Still, as today, we see generally कि भाई जब हम कोर्ट में जाते हैं तो कसम भी खाते हैं कि धर्म से कहो, जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा. हमारे यहाँ धर्म की जो परिभाषा है वो बिल्कुल ऑलटुगेदर डिफरेंट है. जो आज हम धर्म देखते हैं, जिनको हम इंग्लिश भाषा में रिलीजन भी कई बार मान लेते हैं, इट इज नॉट सो. धर्म इज अनदर काइंड ऑफ द moral values which we are carrying since centuries, and the people are respecting that concept of the morality and the ideals in their personal life. So that is why when we appear before the court and in the society कि भाई धर्म से कसम खा लो, जो तुमने कहा है वो ठीक कहा है, या तुम झूठ बोल रहे धर्म खाओ. तो धर्म इज द वैल्यू ऑफ द मोरालिटी एंड द आइडियल्स इन द सोसाइटी. सो entire Indian legal system still based on the dharma. But in the British system, there was no place of the dharma. They are completely based on the problems which are available and how they can redress them. They all codified that laws in particular format that becomes the acts. Then to protect the rights, they have prepared the mechanism to redress the problems of the society. So they created the courts. When they created the courts, then they need the lawyers. Therefore, they start regulating the society by way of the lawyers. And for the purpose of the lawyers, then there is a need of the education, legal education to the people. So they created the education system, where they were taught the legal education, not only in the Britain, but started in India also. And the advocates starting coming in the society, and a separate class has been created. Then the Bar Council of India was come into existence after the independence, and the Bar Council of India has regulated
the system of the advocates in India, how the advocates has to behave, how to get the education, how to appear before the court, the way of conduct, the relationship between the bar and the bench. These are the various parts by way the education, legal education and the legal system has been governed by the Bar Council of India Act, and the state bar councils are also comes under the picture to regulate the advocates. The state governments enacted the laws for the states, and the legal education has to be regulated. For that purpose, the Bar Council of India is the statutory body to regulate the legal education. And for that purpose, there was the system of the 3 years LLB course in the entire India. There was no concept of the 5 years course as of now we are seeing today. So earlier there was a 3 years legal system, legal education system in India after the graduation. But gradually, the time has changed, the need of the society has changed, and by keeping in the international demand, because in the other countries, there is a system of the 10 plus 2 plus 5 years. So now we have started the 5 years course to compact ourselves with the other countries' legal system. There is a system of 17 years of the continuous studies. But in India, once the 3-year system, then it becomes the 18 years of the system, 18 years of the system of the study. So therefore, they cut down 1 year to save 1 year, 1 more year for the students in their life, because the time is very precious aspect of the life. The importance of the legal system or the legal education in India is started evolving by the law commissions. Various law commissions has been constituted by the government of India time to time, and they suggested the ways how the legal education can be improved, can be regulated, and how the good lawyers can be prepared by the legal education. So the law commissions recommended some recommendations, the functions of the legal education, what should be the aims and education, aims and objectives of the legal education. So therefore, the basic object which was given by the law commissions to educate the students to solve the individual client's problem. The basic work of an advocate is to resolve the dispute of an individual with the other party, so that the society can be live in a harmonious manner in the society. The society should be coordinated to each other. There should not be any disputes to live a healthy life, to live a peaceful life. Otherwise, the society will live in a conflictive manner, and that cannot be the good sign for the better country and the better development. Generally, we are seeing in this time in the TVs or the newspapers that happiness index of India is not good, but the happiness index of the other countries like Denmark is the very high. So it is only because of the less dispute in the society. They are living their life with the less disputes to each other. There is a low number of the litigations. They are living their life
with their full peace of mind. And it can only be happened when there is less number of the disputes to each other. So educate the students to solve the individual client's problem is the paramount consideration of the legal profession. Now the question is, the students, those become the advocate, they must be capable to understand the legal system, the law, the rules, the terminology, and so that they can prepare the roadmap for the development of the society. The students, those are under the legal education, they should be skilled with the good quality of the contents. They should be educate how they can produce the good professionals. So the basic aim of the legal education is the good quality advocates, good quality professional lawyer. As defined by the Law Commission, the legal education is science which imparts to students knowledge of certain principles and provisions of the law to enable them to enter the legal profession. Legal education and development have become interrelated concepts in the modern developing society, developing countries. The basic role of the, now today, the entire era has been changed. Everything which is governed by the law in the society, and for that purpose, you need the expert person who has the knowledge of the law. So that is why the Justice Krishna Iyer quoted that profession of law is a noble calling and the members of the legal profession occupy a very high status. Law is the foundation of every society and it develops abiding citizens, lawyers, academicians, and aspiring judges. Legal education in India refers to education of lawyers before their entry into practice. So legal education is the basic foundation of the lawyer. If a lawyer is not equipped with good education, because the foundation of a student is more strongest than a lawyer. Once a student is more educated to the legal terminologies, laws, judgments, and he is sound to redress the issues, then he can deliver the good professional expertise to their clients, to the Indian society, and to the Indian economy. So, trained professionals are required in the society. And for that purpose, the students has to contribute their mindset towards to gain the best education and to read the quality books. And it can only be happened once you have the mentality or the curiosity to understand the law, to search the law. The basic need is to improve your individual professional skills. Then you become the professional lawyer. Unless until you have the depth knowledge of the law, and very interestingly, लीगल प्रोफेशन जो है वो एक मल्टीफेरियस है. जनरली हम लोग कोर्ट में कहते हैं कि भाई एक जो लॉयर होता है उसको एक सुनार से लेकर एक लोहार तक का काम आना चाहिए, एक साइकिल बनाने से लेकर हवाई जहाज तक के काम की नॉलेज उसको होनी चाहिए. इस तरह का एक लॉयर का प्रोफेशन है. क्योंकि लॉयर के पास हर तरह के
लोग आते हैं और कोई भी चीज, लाइक जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, हम रोड पर चल रहे हैं और रोड पर आपने देखा है रोड के ऊपर अलग अलग लाइनें बनी रहती हैं, कहीं एक कट लाइंस होती हैं, कहीं स्ट्रेट लाइन होती है विदाउट डिवाइडिंग। वो भी मोटर व्हीकल एक्ट में प्रोवाइडेड है, वो ऐसे ही नहीं लगाई हैं रोड के ऊपर। जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उनका अपना एक ऑब्जेक्टिव है, उनके अपने एक डायरेक्शन है। आपने देखा रेड लाइट के ऊपर कहीं लेफ्ट का एक एरो बने रहते हैं, कहीं राइट के एरो बने रहते हैं, वो भी मोटर व्हीकल एक्ट में प्रोवाइडेड है। तो एवरीथिंग इज गवर्न बाय, जब आप उसको वायलेट करते हैं तो फिर आप उसके लिए आपका पनिशमेंट का प्रोविजन मोटर व्हीकल एक्ट में दिया हुआ है कि भाई आपने रॉन्ग साइड आप चला रहे हैं या रॉन्ग लेन में चला रहे हैं। लाइक जैसा आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर लेफ्ट साइड पर एक येलो कलर की लाइन पूरी स्ट्रेट बनी रहती है, कि उसके अंदर जितने भी हैवी व्हीकल्स हैं, वो ट्रक्स हैं, बसेज हैं, टेम्पोज हैं, वो उस लेफ्ट लाइन में चलेंगे। तो लेफ्ट लेन में जब नहीं चलते हैं तो दे वायलेटिंग द लॉ। तो एवरीथिंग इज गवर्न बाय द लॉ। आप रोड पर चल रहे हैं, आप रोड पर स्पिट कर देते हैं, थूक देते हैं, उसके लिए भी कॉर्पोरेशन के अंदर एक्ट बना प्रोविजन है कि भाई आप रोड पर थूकेंगे नहीं, पब्लिक प्लेस पर थूकेंगे नहीं। इवन यू कांट टेक द सिगरेट्स इन द पब्लिक प्लेसेस, उसके लिए भी आपको 200 रुपए का जुर्माना कॉर्पोरेशन एक्ट के अंदर बना हुआ है। सो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो विदाउट लॉ हो या लॉ से कवर ना करती हो। तो इसलिए एक एडवोकेट को तभी कहा जाता है कि उसको एक लोहार से लेकर सुनार तक का काम की जानकारी होनी चाहिए। उसको वो बनाना आए या ना आए वो जरूरी नहीं है, उसको बनाना आना चाहिए, बट उसको जानकारी होनी चाहिए उस काम की कि ये काम होता कैसे है। इसलिए द लीगल प्रोफेशन इज वन ऑफ द नोबल प्रोफेशन बिकॉज ऑफ देयर multifarious talented areas are governed by the law, and the advocates are one of the tool of that system. So legal education is the foundation to making a professional lawyer and the good lawyer. So the importance of the legal education is not only to produce the lawyer or a good lawyer, but the lawyer is one of the cultured and law-abiding citizen. कई बार आपने सुना होगा कि ये जो जो कानून जानता है वो सबसे ज्यादा कानून से डरता है। उसका रीजन भी यही है कि उसको पता है कि अगर मैं कोई भी वायलेशन करूंगा तो उसके लिए ये पनिशमेंट है, तो फिर वो उसको करने से थोड़ा सा अपने आप को रोकता है। और जो दूसरी बात आई कि क्रिएट कल्चर्ड लॉ अबाइडिंग सिटीजन होना चाहिए। लॉ कल्चर्ड, अब हमारे सामने बहुत बड़ा एग्जांपल है महात्मा गांधी जी का। तो महात्मा गांधी जी इज वन ऑफ द source of inspiration to the lawyers. Dr. B.R. Ambedkar, one of the source of the inspiration of the lawyers. So these are the two luminaries in India. Those not only the professional lawyer and professionally equipped, but they are also cultured and the law-abiding citizen. They enlightened the entire society of the India and the world. So legal profession is not only to produce the lawyers, but the person, those enlighten the society, those lead the society. Like जैसे भी बहुत बार आपने सुना होगा कि इंडिया की जो एंटायर इंडिपेंडेंट मूवमेंट है, वो इंडिपेंडेंस की मूवमेंट एडवोकेट्स ने चलाई है, लॉयर्स ने चलाई है। और इवन जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड की मैक्सिमम कंट्रीज को जो रूल करते हैं वो एडवोकेट्स ही, बिकॉज दे आर हैविंग द नॉलेज ऑफ द लॉ। इंडिया में आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बाद में जब पॉलिटिक्स में आ जाते हैं तो लॉ करते हैं। क्यों? क्योंकि नॉलेज ऑफ द लॉ इज द प्राइमरी एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट टू लीड द सोसाइटी, टू रिप्रेजेंट द सोसाइटी। तो इसलिए लॉयर इज नॉट ओनली अ प्रोफेशनल पर्सन, बट he is the lighthouse to the society.
Dr. Muhammad Farah, in his observation on the legal education in modern civilized society, wants to include the following aims and objectives to inculcate the students with the operative legal rules, both substantive and procedural. जनरली हम लोग जो देखते हैं होता क्या है कि जब स्टूडेंट्स कॉलेज में होते हैं और वो लॉ की पढ़ाई कर रहे होते हैं तो उनको ये जो डिफरेंस है ये बहुत कम पढ़ाया जाता है. उनको सिंपलिसिटर एक डायरेक्टली जो एक्ट है, सेक्शंस हैं, वो उनको पढ़ाए जाते हैं, साथ में कुछ जजमेंट्स पढ़ाए जाते हैं. बट जैसे ही वो कोर्ट में आता है तो उसको दोनों चीजें एक साथ उसके हाथ में आती हैं. एक तरफ तो सब्सटेंटिव लॉ होता है, दूसरी तरफ प्रोसीजरल लॉ आता है. सीआरपीसी को जिस तरह से पढ़ाना चाहिए उस तरह से उतने डेप्थ के साथ नहीं पढ़ाया जाता, बिकॉज देयर इज अ कांस्टेंट. इतने सारे एक्ट पढ़ाने होते हैं, सेमेस्टर कम होता है, पीरियड आपके पास कम होते हैं, टाइम कम होता है. स्टूडेंट वो सारे जो 30, 35, 40, 50 एक्ट है उनको पढ़ाने के लिए, और वो टाइम के जो कांस्टेंट है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हमेशा रहती है और आज रहती आई है. बट मैं मानता हूं कि जो मैक्सिमम पार्ट है वो उसमें एक पर्टिकुलर एरिया अपने को स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल साइड पर ले जाने का होना चाहिए, सो दैट के स्टूडेंट जो हैं वो जो प्रोसीजरल और सब्सटेंटिव पार्ट है लॉ का उसको अच्छी तरीके से को रिलेट कर सके. और जब वो को रिलेट करेंगे तो जाकर ही कहीं जब प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे बीइंग अ लॉयर, तो उसको वो जो कठिनाइयां यहाँ आकर होती हैं फिर वो नहीं हो पाएंगी. वरना तो यहाँ आकर बहुत ज्यादा कठिनाइयां होती हैं और वो देखने में भी आता है. जब स्टूडेंट ऐसे होता है जैसे एग्जाम में स्टूडेंट एग्जाम देने जाता है और वो जैसे क्वेश्चन पेपर सामने आता है तो ब्लैंक हो जाता है दिमाग. ऐसे ही ये लीगल प्रोफेशन में जैसे ही वहां से कॉलेज से वो डिग्री लेकर आता है और एंट्री करता है, तो एंट्री करते ही तो यहाँ कहानी उल्टी होती है एकदम. वहां सिखाया जाता है कि अप्लाई कैसे करना है, यहाँ आते ही सिस्टम ही डिफरेंट हो जाता है कि बचाना कैसे ये बताओ. तो उसको वो दैट द सेकंड पार्ट इज नॉट अवेलेबल टू द स्टूडेंट इन द कॉलेजेस. So therefore, the practical aspect and the procedural part should be the one of the important aspect for the purpose of a good lawyer. Unless until he knew the procedures of the court, he can't be able to deliver the skills in the profession as well as to the clients. And the one of the important aspect is the student should be equipped with the historical and sociology background of the country's legal system. हमने देखा होगा बहुत सारे हमारे यहाँ कानून ऐसे बने हैं जो सोसाइटीज को ध्यान में रखकर बने हैं कि भाई लाइक जैसे हम आपको कुछ एग्जांपल बताता हूँ. जैसे पॉक्सो एक्ट बना तो चाइल्ड के ऊपर जो एट्रोसिटीज होती हैं उसके लिए बना. डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बना, जो फीमेल्स हैं घरों में रहती हैं उनके साथ जो एट्रोसिटीज होती हैं उससे रिलेटेड बना. ऐसे ही जुवेनाइल जस्टिस के लिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बना. ऐसे ही जो सोसाइटी के SC/ST हैं उनके लिए अलग से प्रोविजन बनाए गए. तो ये क्यों बने? ओनली बिकॉज ऑफ दी जो सोशल बैकग्राउंड है इंडिया की, जो हिस्टोरिकल कंडीशंस रही हैं इंडिया की, उनको ध्यान में रखकर लॉज को बनाया गया. Unless until the student know the historical background or the sociological background of the country, they can't understand the reasons of the existence of these laws. Otherwise, they will always comment on the laws. They will always not agree with the laws because they are not the general laws, but they are the specialized laws to the specialized society of the country. And the important aspect is the not only to the knowledge of the historical or social background, but the other legal system of the world, the comparative study, what is going on in the other countries. लाइक मैं एक एग्जांपल बताता हूँ. मोर और लेस जो एविडेंस एक्ट है वर्ल्ड वाइड मोर और लेस एक जैसा ही है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है. टर्मिनोलॉजी डिफरेंट होंगी, बट
to proving the evidence, to prove the evidence, to collect the evidence. More or less the system is the same. But without reading that system, without reading that laws, we can't understand. So, and another thing is the legal system, how they are delivering the justice, the mechanism. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और बताता हूँ, इंडिया के अंदर प्री बार्गेनिंग का सिस्टम आया. आपने देखा होगा आजकल अखबारों में खूब सुनते हैं कि लोक अदालत लगती है जी. अब दिस इज नॉट द सिस्टम ऑफ द इंडिया. It is imported from the other countries like America. Pre-bargaining is also imported from the America. So it was not the system of the Indian legal system, but ये import किए गए क्योंकि वहां के legal system में ये चीजें चल रही थी to reduce the number of the cases and to live the people in a harmonious relationship in the society. Otherwise, continuous litigation and continuous battle to their issues in the court up to Supreme Court never be the result into a harmonious relationship. So उसको कम करने के लिए और litigation को कम करने के लिए नया system आया plea bargaining. So other countries में जो legal system चल रहे हैं वो legal system हम जाने और समझें कि दूसरी countries में कौन सा बेस्ट सिस्टम ऐसा है जिससे हम यहां अपने देश में लोगों को एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सके. सोसाइटी के अंदर जो चल रहा है उसको हम कैसे कम से कम जो प्रॉब्लम्स है उनको कम कर सके. अब स्टूडेंट्स में और नॉलेज कैसे बढ़ सके तो उसके लिए क्या है कि भाई स्टूडेंट्स एनकरेज टू पार्टिसिपेट इन डिस्कशंस, सेमिनार्स. जनरली क्या होता है कि हम लोग बहुत ज्यादा मूट कोर्ट में नहीं जाते हैं. हम लीगल जो प्रोफेशन है उसके जो डिफरेंट जो डायमेंशंस है उससे रिलेटेड सेमिनार्स में कम पार्टिसिपेट करते नहीं, तो फिर हमारा पार्टिसिपेशन बड़ा एक लिमिटेड सा होता है. जैसा मैं आज में देख रहा हूँ 47 लोगों का अभी इसके अंदर पार्टिसिपेशन. अब जो लीगल सेमिनार्स हैं वो लीगल सेमिनार्स हमें एक डिफरेंट टाइप की एनलाइटनमेंट प्रोवाइड कराते हैं, हमें हमारी नॉलेज को एनहांस करते हैं, लार्ज करते हैं टुवर्ड्स दी लॉ. सो इसलिए हमें उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए. और आज की डेट में तो जब से कोविड आया है तो जो आईटी है, वेबिनार्स है, उसके कारण इंटरनेशनल लेवल तक की नॉलेज हमारे पास आज गेन कर रहे हैं. अगर हम उसको सर्च करें नेट के ऊपर तो सैकड़ों हमें पता लगेगा वेबिनार्स हो रही हैं, सिंपोजियम्स हो रहे हैं, सेमिनार्स हो रही हैं, ऑनलाइन चल रही हैं. कुछ ऐसी हैं जो पेड हैं, कुछ ऐसी हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है. हम उनमें पार्टिसिपेट करें. इवन जो मूट कोर्ट्स है, तो मूट कोर्ट्स खाली इंडिया में ही नहीं होते या इंडियन कॉलेजेस में ही नहीं होते हैं, बल्कि इंटरनेशनल लेवल के मूट कोर्ट्स होते हैं. दूसरी जो अदर कंट्रीज है उनके मूट कोर्ट्स होते हैं और ऑनलाइन हो रहे हैं. आज उसका एडवांटेज हमें लेना चाहिए कि भाई हम उनका एडवांटेज ले सकें. सो जो कंसेप्ट्स हैं उसकी क्लैरिटी हमें बहुत ज्यादा हो सकती है अगर हम उस डिस्कशन को करते हैं सीनियर्स के साथ, टीचर्स के साथ, प्रोफेसर्स के साथ, और सेमिनार्स में खुद भी अपने आप को पार्टिसिपेट करते हैं. हम अपने जो पेपर्स हैं, रिसर्च पेपर्स हैं, हम उनको लिखते हैं. छोटे छोटे जर्नल्स हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ ऐसे हैं जो ऑन पेड है. आप अपने लेक्चरर से, प्रोफेसर से बात कर सकते हैं, वो आपके जो पेपर्स हैं उनको प्रिंट करा सकते हैं, पब्लिश करा सकते हैं. मैं कहता हूँ ना पब्लिश कराएं, आप लिखें और अपने टीचर्स के साथ डिस्कशन करें कि भाई मैं और बेटर कैसे लिख सकता हूँ, ये लिख सकती हूँ, मेरी इसमें रिसर्च पेपर में क्या कमियां हैं, मुझे बताया जाए. तो अब वो वंस यू स्टार्टेड राइटिंग देन ऑटोमेटिकली यू आर एनहांसिंग योर स्किल्स ऑफ द लीगल प्रोफेशन. और मैं तो जनरली कई बार कहता हूँ लीगल जो प्रोफेशन है वो इट इज नॉट लेस देन द मैथमेटिक्स, पूरा कंप्लीटली मैथमेटिक्स है. तो आगे की डिस्कशन में भी मैं आपको बताऊंगा कि ये किस प्रकार से
इक्वल टू द मैथमेटिक्स है, जैसे मैथमेटिक्स के फार्मूले वैसे ही अपने जो लीगल प्रोफेशन है उसमें एक्ट्स के जो फार्मूले हैं वो अप्लाई होते हैं. द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द legal profession is the identify the problems and ensure social and economic justice through rule of law, to eradicate the justice, poverty, corruption, and nepotism from the society. The legal education stands for enhancement of the human sensitivity and injects a sense of protecting human liberty and equality before the law. The curriculum of the legal education should be thought of in terms of its objective. We will find that legal education may be a multifold in a developing democratic country like ours. They are to develop perceptions and to understand the problems of one society and to influence values and attitude, to generate different kind of skills and knowledge needed for task in the society, to broaden opportunity and mobility in society, notably among groups who may have been deprived, to develop research of value to education and society with use of educational facilities. The legal, for the purpose of a legal system or legal education, generally we are seen in the colleges, the facilities to the students are less. They are not getting quality books. They are not getting quality materials. The journals, those are national and the international journals. And now in these days, there are number of the softwares where you can do the research of the judgments and the legal topics. So these are the one of major hurdles in the good education. So that has to be provided to the students for a better and good quality lawyer. The globalization, also one of the important aspects. The globalization has called upon the law to educate numerous responsibilities in society, and lawyers as expected to act as change and agents and social engineers in governance of the development. So these days, the globalization is playing a very important role for development of the legal system. Now, a good lawyer is required not only the Indian companies or the Indian systems, but the foreign companies, those are coming in India. They are not importing the lawyers from their own countries, but they are adopting the lawyers. Those are in India. They are registered under the Bar Council of a state and having the license to practice in India. So they need the good lawyer. Those are not only equipped with the local laws, but the international laws also. Their skill are not only skill up to the lawyer, but that should be up to the mark. That should be not less than international level. So it is the need of the globalization as on today. The legal education should be able to meet over growing demands of the society and should be thoroughly equipped to cater the complexities of the different situations. Now in these days, we are seeing generally the arbitration. Arbitration is playing a more important role in the commercial side. Generally, in maximum agreements, the people incorporating the arbitration clause. The reason behind is, once you enter into the arbitration proceeding, then you cut down the process of the legal justice delivery system. It minimizes the period, not years,
but within a year it has to be conclude the case, or in sometimes it concludes the case within 2, 3, 4 months. So it cuts short the period, but in the courts generally we are getting the dates 3 or 4 months in the first date, then continue because of the workload. There are thousands of cases are pending in a particular court. So the current demand should be taught to the students. The legal education has an important role in directing the moderating social change. In this regard, it has to operate and concise keeper of society. The legal communication shall manifest higher moral values, shall maintain high degree of competence, discipline, and ensure that no section of society is denied of access to its services because of poverty and social status. It is one of the important part of a lawyer or a student of the law that मैं तो पैसे वालों की केस करूंगा, मैं गरीब आदमी की केस नहीं करूंगा. ये जो थॉट है, पैसा कमाना ये लाइफ की नीड है, बट पैसा ही सब कुछ है ऐसा नहीं है. जो सोसाइटी के डाउन ट्रोडन पीपल हैं, पैसा नहीं है जिन लोगों के पास, बट उनके इश्यूज कुछ ऐसे फंस गए, किसी पड़ोसी ने उसकी जमीन को कब्जा कर लिया. गांव के अंदर हम देखते हैं जनरली लोग गरीब लोगों की जमीनों को अपने पास रख लेते हैं गिरवी, और उसके बाद उनकी जमीन ही हड़प जाते हैं. अब उसके बाद बेचारे के पास खेत की जमीन होती है, किसी के पास 2 बीघे, किसी के पास 4 बीघे, जिंदगी भर की वो कमाई निकाल कर वो कर्जे के अंदर ही निकाल देता है. अब ऐसे लोगों के लिए लड़ने के लिए भी अपने पास एक माइंडसेट होना चाहिए, और वो कहां से मिलेगा? जब हम लॉ की स्टडी कर रहे होंगे, स्टूडेंट होंगे, टीचर्स हमें वो सेंसिटाइज करेंगे उस पार्ट के लिए सोसाइटी में. तो लीगल प्रोफेशन के अंदर आने से पहले जो टीचर्स का जो रोल है, जो लीगल एजुकेशन के अंदर उस मॉरलिटी को डालने का जो रोल है, वो टीचर्स एक बहुत बड़ा रोल उसमें प्ले कर सकते हैं. कि जो कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट देता है, राइट टू एक्सेस टू द कोर्ट, और उसी के लिए आपने देखा होगा आजकल आपने लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट आया, कुछ लोग जानते होंगे कि भाई लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट आया, जिसमें आप देखते हैं लोक अदालतें लगती है हर महीने, सेकंड सैटरडे और संडे को लोक अदालत लगती है. तो ये इसीलिए लगाई गई कि जो गरीब आदमी है वो आकर उसके अंदर अपने इश्यूज को रिड्रेस करा सके. जो डायरेक्टली एक एडवोकेट को बियर नहीं कर सकता, उसकी फीस नहीं दे सकता, तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन था, उस प्रोविजन की वजह से ये फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई गई कि जो लोग एडवोकेट को एंगेज नहीं कर सकते, दे कैन अप्रोच टू द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एंड दे विल प्रोवाइड द एडवोकेट फ्री ऑफ कॉस्ट. अब उसके लिए जो एडवोकेट्स हैं, जरूरी नहीं कि सब लोग जो लीगल सर्विस अथॉरिटी के पैनल पर हो वही इस काम को कर सकते हैं. बीइंग ए लॉयर, बीइंग ए सेंसिटाइज्ड पर्सन ऑफ द सोसाइटी, having the pain for the poor in the society, तो being a lawyer मैं भी फ्री ऑफ कॉस्ट उनके केस करूं जो गरीब हैं, सोशली बैकवर्ड हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं. अब सवाल ये आता है कि एक अच्छा एडवोकेट बनने के लिए क्या चाहिए, तो उसके लिए ट्रेनिंग. अब एक एडवोकेट विदाउट अनट्रेन्ड एडवोकेट कांट डू एनीथिंग. वो आएंगे, डिग्री तो लेकर आएंगे, बट उसको यहाँ कर कुछ समझ ही नहीं आएगा. इसलिए जो लीगल एजुकेशन जिस समय दी जा रही है, उसको एक एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग वहां पर मिलनी चाहिए कॉलेजेस के अंदर ही. और उसका जो बेस्ट मैकेनिज्म है वो ये है कि टाइम टू टाइम कॉलेजेस में जो प्रोफेशनल्स हैं उनको इनवाइट किया जाए, अलग अलग स्ट्रीम के प्रोफेशनल्स को इनवाइट किया जाए. जो जिस ग्रुप में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उस ग्रुप से रिलेटेड प्रोफेशनल्स को इनवाइट किया जाए, और वो आकर प्रैक्टिकली वहां पर लोगों को, स्टूडेंट्स को एनलाइट करें कि प्रैक्टिकली होता क्या है कोर्ट के अंदर. और ये जो आपको आज यहाँ पढ़ाया जा रहा है,
इसको हम प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करते हैं या कर सकते हैं कोर्ट में। तो वो जो ट्रेनिंग है उसके लिए, जैसे मैंने बताया कि मूट कोर्ट है, अब मूट कोर्ट ऑर्गेनाइज करिए, ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ, देन स्टार्ट अ मूट कोर्ट। उससे क्या होगा कि वो जो उसने कल सीखा था या 4 दिन पहले सीखा था उस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर, नाउ ही इज प्रैक्टिकली applying that knowledge into the moot court. So this is the basic concept of the लीगल एजुकेशन के बेसिक रोल क्या है लीगल एजुकेशन का एक गुड लॉयर को प्रोड्यूस करने में। सवाल ये आता है कि भाई अब कोई भी काम होता है तो उसमें चैलेंजेस तो हमेशा होता है, और हमेशा वो चैलेंजेस जो होते हैं वो रिड्रेसेबल होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो रिड्रेस नहीं होते, बट हर टाइम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चैलेंजेस होते हैं। जैसे हम एक कदम आगे बढ़ते हैं, नया चैलेंज होता है हमेशा। आपने रोड पर देखा होगा कई बार एक फ्लाईओवर बनता है, तो बनाया तो इसलिए था कि यहाँ से जो ट्रैफिक वो स्मूथ चलना चालू हो जाए, लेकिन पता लगा उससे आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर आगे बढ़ते एक बॉटलनेक बन गया और वहाँ ट्रैफिक जाम होने लग गया। तो वो जो हमने फ्लाईओवर बनाया था उसका सारा ऑब्जेक्टिव ही फ्रस्ट्रेट हो गया बॉटलनेक बनने की वजह से। तो हमेशा चैलेंजेस हमेशा आते रहेंगे लाइफ के अंदर, और कहीं पर भी हम कुछ भी करेंगे तो हमेशा एक अगला स्टेप पर एक चैलेंज आपको, वो आपका वेट कर रहा होगा आपकी स्किल्स को और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए। सो चैलेंजेस बिफोर द लीगल एजुकेशन इन इंडिया, the rise of the new economy, globalization, privatization, and deregulation has posed new difficulties to legal education around the world. To meet the countries and people's expectations from law and legal services in the next few years, the state must devise the best approach for strengthening professional legal education while also promoting law as liberal academic discipline. Development law and attorneys have critical role in facilitating, moderating, and controlling all of these challenges. The Indian legal profession and legal education had not developed a rationally functional approach to the problems of law and legal order. Legal education gathered momentum and acquired importance in free India. India became free with a large number of its citizens being poor and illiterate. Impediments of the legal education. So these are the basic problem. Now you are seeing the globalization has been started, privatization has been started. Government also selling their PSUs. They are encouraging the private institutions. So we need the lawyers, and the lawyers producing machinery is the law educational institutions. So therefore the educational institutions or the law institutions that should have to be developed their own skills also. It is not only the duty of the government, but the institutions also develop their programs to cater the demand of the society. Every person is seeing towards the advocacy. They need a good lawyer. So we can't run on the traditional path, which since years we are running on that path. Now we need the current era. We need to change the path, the mechanism of delivering the teaching, the mechanism of learning to the students, the tools. So these are the different types of the way by which we can prepare the students, those are having the good knowledge of the law. The commercialization of legal education is one of the impediment.
the problem, the challenge, fees and capitation fees. जनरली देखा होगा कि कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जहाँ पर हम जाते हैं तो फीस तो होती है शायद 20,000 रुपये, लेकिन वो कहता है एडमिशन तो मिल जाएगा, लेकिन आपको 50,000 रुपये या लाख रुपए देने पड़ेंगे, एडमिशन आपको मिल जाएगा. सो ये भी एक चैलेंज है. और जो एग्जॉर्बिटेंट फीस है, कहीं पर 20,000 रुपए तो कहीं 50,000 रुपए, कहीं पर 3 लाख रुपए सालाने की फीस है, कहीं पर 5 लाख रुपए 7 लाख रुपए सालाने की फीस है. ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है विद रिगार्ड टू द फीस स्ट्रक्चर. इस इशू को लेकर एक केस सुप्रीम कोर्ट में गया, जिसका नाम था मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, AIR 1992, सुप्रीम कोर्ट 1858. अब इस केस में क्या हुआ? इशू द राइट टू एजुकेशन. अब right to education is a fundamental right or the right granted by the Constitution of India. The directive principles which are fundamental in the governance of the countries cannot be isolated from the fundamental rights guaranteed under Part 3 of the Constitution. These principles have to be read into the fundamental right. Both are supplementary to each other. The fundamental rights and the fundamental duties, both are supplementary to each other. So the basic facts of this case is the petitioner brought to the challenge the constitutionality of the imposing of capitation fees, a fee based on the number of persons to whom a service is provided rather than the actual cost of providing a services. On those bases, who wanted to enter a private medical schools and were not admitted to the government seats. These seats are reserved by the Government of India for members of the communities that are explicitly recognized by the Indian Constitution as requiring support to overcome historic discrimination or other groups designated by the government. The private medical schools charge ₹2,000 for students admitting to government seats, but for ₹25,000 for those not admitted to government seats from within the state, and ₹60,000 for students not admitted to government seats from a different states. The main issue at stake were whether there is a right to education guaranteed to the people of India under the Constitution, and whether the charging of capitation fees violates this right and the equality clause under Article 14 of the Constitution. So they raise this question because it creates the distinction between the society, discrimination between the society, and violation of the Article 14 of the Constitution of India. So the Supreme Court, when discussing the issue, and after going through the arguments of the parties, the court granted the petition and struck down the payment of capitation fees as a condition of entry into any educational institution. So they upheld this constitutionality of Article 14 and the right to education. The notification of the government by taking the capitation fees struck down by the Supreme Court of India. The petitioner struck down the payment of the capitation fees as condition for entry into an educational institution prospectively while denying admission to the petitioner. In Unni Krishnan versus State of Andhra Pradesh, the Supreme Court confirmed this decision that the right to education
indeed flowed directly from the right to life, which poses an obligation on the state to provide basic education to all citizens during their childhood. However, it expressed its disagreement that this right is guaranteed at all levels and rather only required basic education for children under Article 14 years old. In the subsequent case of MC Mehta, that is a different case. So that demand of the capitation fees was directly struck down by the Supreme Court in this case of Mohini Jain. Then thereafter, the another case came to the Supreme Court, the Unni Krishnan versus State of Andhra Pradesh in 1993. In this case, the case was a string of writ petition and civil appeals filed before the apex court for the country. The matter under debate was on the determination of the extent of Article 21, that is right to life and personal liberty under the Constitution of India. The appellant's arguments were presented with the prayer that the professional education must also be an integral part of the right to education granted under the Constitution. The major contention of the side of the petitioner were that since the right to education applies to primary education, and the same should also be made applicable to professional education. So in that case, the issue was the same. The right to education should also be applicable to the professional education, like we are the student of the law. So we are also part of the professional education. So that right has to be extended to the professional education also. The specific question that the right to primary education, as mentioned in Article 45 of the Constitution of India, is a fundamental right under Article 21, is not discussed in the Mohini Jain case. So that part was not discussed in the Mohini Jain case, but it was discussed in this Unni Krishnan case. It becomes pertinent to part of the Supreme Court to clarify the issue. The case came into subsistence through petitions filed by the private educational. In this case, the private educational institution goes to the Supreme Court. These state laws were enacted to regulate the fees charges in the states of Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh, and Maharashtra. Some educational institutions in the above mentioned states had resisted and took matters to the court. It also questioned the precedent established in the case of Mohini Jain versus State of Karnataka. Article 21 of the Constitution of India was discussed with its extension to right to education. The important question posed before the bench was whether the right to education under Article 21 extends to the professional courses. The argument of the petitioner was that state has no absolute monopoly in providing education to its citizens, and it is at loggerheads with Article 19(1)(g) of the Indian Constitution, as imparting education can also be considered as business. So the argument was that the education should be considered as business. The London Council further contended that they have the right to establish a self-financing educational institution where the autonomy is given to collect fees and money from the students seeking admission. In contrary, the other side, the respondents argued that the government taken the steps to implement the Article 45. The state has duty only to provide primary education to children, as Article 45 mandates only providing free and compulsory primary education for children of 14 years age or less. Moreover, the cost incurred in higher education is used, and making it mandatory for the students, for the state to extend the right to education would be a farce and not logically maintainable. This was the argument of the state.
The accessibility to all primary schools has also been increased, which makes the children approach schools easily within commutable distance. It was also contended that there would be large financial mismanagement in providing education in medicine. It was also noted that 3.2% of the total financial share was given to the health sector and was given to the medical education. Priorities were given to the health sector, dealing with issues like promotions of primary health and hospital services. So every state has their own priorities. In that case, they demonstrate to the court that they have the priority to provide the hospital services and primary health services to the residents of the state. But after hearing both the sides, the court noted that the citizen of the country has fundamental right to education granted by the Constitution of India. This is the starting line of the judgment. The fundamental right to education granted by the Constitution of India. The said right comes under the Article 21 of the Constitution. This right is, however, is not absolute. Its content and parameters have to be determined under the light of Article 45 and Article 41 of the Constitution. In other words, every citizen of this country has right to free education until he completes the age of 14 years. Thereafter, his right to education is subject to the limits of economic capacity and development of the state. The court further ruled that a citizen of this country may have a right to establish an educational institution, but no citizen, person, or institution has right much fees, much less a fundamental right to affiliation or recognition of grant in aid from the state. The recognition and or affiliation shall be within the scheme continued in part 3 of the judgment. No government/university or authority shall be competent to grant recognition or affiliation except following the said scheme. The said scheme shall constitute a condition of such recognition or affiliation as the case may be, in addition to such other conditions and terms which such government, university, or other authority may choose to impose. Those receiving aid shall, however, be subject to all such terms and conditions as aid giving authority may impose in the interest of general public. Thus, court dismissed the writ petitions filed by the petitioners. The financial aid is to be provided by the government, the state government or the central government, to support those persons, those are needy. They cannot afford their fees to get the professional education. So these are the challenges for providing the good quality legal education and the some of the another impediment, that is there is no separate law university in all the states to govern the educational institutions like the medical colleges. So they are the exclusively made for the purpose to deliver the medical education, but there is no single university in the entire country which is established only for the purpose to deliver the education with regard to the law. The law institutions are presently affiliated to general universities which already have lots of burden of different faculties like art, science, and commerce colleges. This caused adverse impact on the curriculum, syllabus, etc., and of course on the development of the legal education. So this is one of the another impediment, because the law department is a very small department in generally we are seen in the universities. But the other departments like the arts and the commerce,
they have number of sub departments, but the law department is not as equal to the other departments, although the law department should be one of the major limb of the society. So it is one of the impediment where because of the less number of the professors, the less number of the strength of the students, so the less number of the facilities in the department, so they are not able to enhance their curriculum equipped with the current demand of the market. And the another issue is the mushrooming growth of the private non-law colleges and the other colleges seen everywhere. They are not properly equipped with the infrastructure. They are not having the 100% full-time professors and the lecturers or the teachers. The permanent vacancies are always there, but due to some of the practices, they are not appointing the permanent lecturers. We are generally finding the guest lecturers in the colleges. And आजकल तो एक फिनोमेना शुरू हो गया है कि चलो कुछ और नहीं कर सकते, लॉ ही कर लो. It is one of the biggest impediment of preparing the good lawyers. कि चलो यार कुछ नहीं कर सकते तो लॉ ही कर लेते हैं. But once a student taking the admission in the medical colleges, the chartered accountant institutions, they are not thinking so कि चलो कुछ और नहीं कर सकते सीए ही कर लें, कुछ और नहीं कर सकते तो एमबीबीएस ही कर लें या फार्मेसी कर लें. No, this phenomena has to be changed to the legal education. It is not a part-time job. The students, those willing to get the legal education, they should have the tendency or the temperament higher comparative to the student of the medical science or to the chartered accountant or the other, the BTech and the BSc side. So they should not be treat themselves as less than them. Their duty is casted upon to regulate the society, to deliver the justice to the society, to give the happiness, to give the harmonious life in the society to the people of the society. So it is not a part-time course and just to get the degree कि हाँ चलो यार मैं तो लॉ ग्रेजुएट हूँ, मैंने तो एलएलबी कर ली थी, कुछ नहीं कर रहा था तो टाइम पास करने के लिए एलएलबी कर ली. So that thought should not be encouraged by the institutions. That should be curbed to get the best students and the best professional of the law. And the another issue is in some colleges, they are delivering their education in their local languages. Once they are getting the education in their local languages, so they are not getting the good quality study materials. So for taking the good quality materials, the language is only the English. The good study material available only in the English language. If we want to study the King's Bench judgment, Queen's Bench judgment, the Supreme Court judgment, it is only available in the English language. Though we can ask to the courts to translate them into the Hindi, but it is not available to each and every judgments. It is only at the request of the particular party. So if the good textbooks are available only in the English
Another impediment is the commercialization of the legal education. The entire purpose of the commercialization to earn the money, to earn the profit, and the entire legal education system has been converted into a business. Like generally जैसा आजकल हम देखते हैं हॉस्पिटल्स का, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स खुल गए हैं और वो आज उन तक जाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि उनका जो रेट्स है वो उतने हायर साइड पर चले गए हैं. डेड बॉडी भी नहीं देते जब तक पैसे नहीं देते. कमर्शलाइजेशन जो हो गया है, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट इम्पेडिमेंट फॉर प्रिपेयरिंग, प्रोवाइडिंग गुड लॉयर्स. जो लीगल एजुकेशन है उसका प्राइवेटाइजेशन जो हुआ है और उससे जो कॉलेजेस दुनिया भर के बहुत खुल गए हैं, उससे जो गुड क्वालिटी अपने को लॉयर्स चाहिए वो अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं. देखते ही हैं, उसमें मुझे कुछ नया बताने की जरूरत नहीं, सब लोग इन चीजों को जानते हैं. आज जिस तरह से लीगल एजुकेशन में स्टूडेंट्स आ रहे हैं और वो क्लासेस कैसे करते हैं पता ही नहीं होता. 6 साल बीतने के बाद, 5 साल बीतने के बाद भी कि मूव कोर्ट होता क्या है. इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द good professionals, teachers, and the educational institutions. The next, the challenges, then the weaknesses should be there for each and every education institutions. The weakness is that the course content for these courses based on the guidelines from the Bar Council of India. So Bar Council of India ने अपनी कुछ guidelines बना रखी हैं, उसमें rules बने हुए हैं, उसमें उन्होंने subjects decide किए हुए हैं कि भाई आप इन subjects को ही पढ़ाएंगे. You have no option to incorporate the subjects those are related to the current demand of the society, the industry. अभी मैं आपको example बताता हूँ कि जो आज MBA लोग करते हैं, BBA करते हैं, तो उनका जो करिकुलम है वो करिकुलम जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो बना रहे हैं तो करंट मार्केट की डिमांड को देखकर बना रहे हैं कि मार्केट की करंट डिमांड क्या है आज. अगर हम मार्केट की करंट डिमांड के हिसाब से अपने करिकुलम नहीं बनाएंगे तो हम जो वहां प्रोफेशनल्स तैयार कर रहे हैं वो प्रोफेशनल्स आज के डिमांड के हिसाब से कैटर कभी भी नहीं कर पाएंगे. लाइक आज से 20 साल पहले अगर हम चले जाएं तो जो मार्केटिंग के टूल्स थे वो डिफरेंट थे, सेल्स के टूल्स डिफरेंट थे, लेकिन आज वहां का जो एजुकेशन डिलीवरी सिस्टम वो कंप्लीटली चेंज हो गया. वो केस बेस्ड हो गया है. वहां केस स्टडीज आती हैं, केस स्टडीज आने के बाद उनको वहां डिस्कस किया जाता है. डिस्कस करने के बाद वहां पर उसके हिसाब से स्टूडेंट्स को कैटर करा जाता है कि भाई आपको किन चीजों का ध्यान रखना है. ये प्रॉब्लम्स आज की डेट में मार्केट के अंदर है और उसके लिए हमें अब अपने आप को चैलेंजेस को तैयार करना, चैलेंजेस से लड़ने के लिए तैयार करना है. तो जो करिकुलम है वो करिकुलम इस तरह का बनाया जाएगा, जो कोर्स कंटेंट है वो इस तरह के बनेंगे कि जिससे वो जो मार्केट की डिमांड है उस डिमांड को कैटर कर सके. लाइक मैं एग्जांपल बताता हूं आपको. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आया. आज से 20 साल पहले तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट नहीं था. जब मैंने भी लॉ करी थी नहीं था. बहुत सारे ऐसे और एडवोकेट्स हैं, प्रोफेसर्स हैं जिन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट पढ़ा ही नहीं था उस टाइम, क्योंकि था ही नहीं, वो मार्केट की डिमांड ही नहीं थी. लेकिन आज जैसे जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई, मार्केट के अंदर उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ गई, हर काम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से गवर्न करने लग गया, तो फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लॉ आ गया और उसको हम सब लोगों ने पढ़ना चालू किया. ऐसे ही आज के डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आज से 10 साल पहले तो कोई जानते नहीं था, 15 साल पहले कोई जानता ही नहीं था. बट आज आप देखते हैं कि रोड पर आप चलते हैं तो गूगल मैप आपको बता देता, आप 15 मिनट में पहुंच जाएंगे, 20 मिनट में पहुंच जाएंगे.
यही तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आप जिस गली से गुजर रहे हैं वहां कैमरे लगे हुए हैं, उन कैमरों के अंदर आपकी फोटो आती है और वो जो डिपार्टमेंट वाले उसको चेक कर रहे हैं या कंट्रोल कर रहे हैं, वो 1 सेकंड में आपकी फोटो को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। आज इतने सारे केसेस सॉर्ट आउट हो रहे हैं ओनली बिकॉज ऑफ द साइंटिफिक एविडेंस। सो ये जो करंट डिमांड है, उस करंट डिमांड के हिसाब से हमारे कोर्स करिकुलम भी होने जरूरी है। अगर वो कोर्स कंटेंट हमारे वैसे नहीं होंगे तो हम गुड क्वालिटी एडवोकेट्स को कभी भी प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। The another important aspect is exorbitant differences among law schools. Even though India has several reputable national law universities, several private law colleges readily provide degree to the students without even having to provide sufficient education. This in turn has an impact on students graduating from various law schools, with the quality of the students graduating from different institutions vastly different when compared to students graduating from other private institutions due to the vast difference in the scope and type of the education they receive. Like मैं एग्जांपल बताता हूँ, जो स्टूडेंट्स एनएलयू से पढ़ रहे हैं, अब एनएलयू का जो स्टूडेंट्स है उसको जब पढ़ाया जाता है तो वो पूरा कोर्स कंटेंट उसके इस तरह से बनाए जाते हैं कि वो प्रैक्टिकली उसको इक्विप कर सके। उसको वहां पर कंप्यूटर्स एंड सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराए जाते हैं कि वो जजमेंट्स को वहां रिसर्च करे। रिसर्च करने के बाद उन जजमेंट्स का जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है उसको अपने केस के साथ कोरिलेट करें। इस तरह का एनवायरनमेंट उसको प्रोवाइड कराया जाता है। मूट कोर्ट्स उनके रेगुलर कराए जाते हैं सो दैट के ही कैन आर्ग्यू द केसेस इन द कोर्ट्स। उसको इस तरह का एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराया जाता है कि वो शुरू से ही अपने आप को जो कोर्ट प्रेमाइसिस है उसके साथ कहीं ना कहीं कोरिलेट कर ले। और एक डिस्टिंक्शन जो बीच में आ गई है कि भाई ये तो एलिट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के हैं या ग्रुप्स के हैं, और ये तो कहीं एक दूसरे स्टेट की वैसी यूनिवर्सिटी से पढ़कर आ रहे हैं या कॉलेज से पढ़कर आ रहे हैं। ये जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है ये भी एक बहुत बड़ा इम्पेडिमेंट है गुड लॉयर्स को प्रिपेयर करने में। और जो फीस स्ट्रक्चर उनका प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का है वो तो अपना में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट मैटर है ही कि हम उनको क्या प्रोवाइड करा रहे हैं उस फीस स्ट्रक्चर के अंदर और कौन से स्टूडेंट्स उसमें आ सकते हैं। अब आगे क्या सोचे हम, सवाल ये आता है कि अब आगे क्या करें। तो करना क्या है, द सिलेबस विच हैज बीन आउटडेटेड कुड बी हर्डल टू लीगल एजुकेशन बिकॉज सोसाइटी इज डायनामिक एंड with time it tends to change and so does the laws. Like जैसा मैंने एग्जांपल आपको दिया कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आ गया, साइबर लॉज आ गए, आपके जो पहले फेमा चलता था फेमा को उनको चेंज कर दिया तो उसकी जगह पर आ गया मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आ गया। पहले कंपटीशन कमीशन नहीं था, उससे पहले एमआरटीपी होता था, तो फिर अब कंपटीशन कमीशन उसकी जगह पर आ गया क्योंकि वो आज के लेटेस्ट डिमांड को कैटर कर रहा है। तो ये जो करंट डिमांड से रिलेटेड करिकुलम है उसको उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करना है अपने को गुड लॉयर प्रिपेयर करने के लिए, जो मॉडर्न नीड को कंप्लीट कर सके, उसको फिलफिल कर सके। The another aspect is the giving the huge frequency of the participation in international moot court competitions, which I had told earlier.
The moot court competition, participation in the moot court competition is one of the best mechanism to develop their professional skills. The law students' thirst for knowing international and competitive laws has grown tremendously during past years. Students must be trained with a balanced curriculum that shapes them into a better lawyer by providing them with information and training in Indian law, while also preparing them to face difficulties in the outside world with both international and foreign legal systems. So, the students must have to be keen to participate in the moot courts, whether the domestic level, the college level, the international level. और एक मेरा छोटा सजेशन है, स्टूडेंट्स आपस में भी एक ग्रुप बना लें, मूट कोर्ट सोसाइटी बना लें. कॉलेज के अंदर प्रोग्राम होता है, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बाहर आप खुद करा सकते हैं मूट कोर्ट. प्रोफेसर्स को इनवाइट करें अपने कॉलेज से, हमने मूट कोर्ट एक ऑर्गेनाइज किया है और हमारे पास इतनी एंट्रीज आ गई हैं, आप आए और मूट कोर्ट को जज करें. Certainly the professors will happy by taking the steps by the students. Though it is not only the duty of the professors, but the students also. अपने अंदर एक लर्निंग अप्रोच होनी चाहिए. हमारे अंदर खुद की लर्निंग अप्रोच होगी तो 100% हम बेस्ट एजुकेशन उसी सिस्टम में, जिस सिस्टम में आज हैं हम, उसी सिस्टम में बेस्ट एजुकेशन भी हम गैदर कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं. उन्हीं प्रोफेसर्स के थ्रू, उन्हीं लेक्चरर्स के थ्रू हम बेस्ट एजुकेशन भी रिसीव कर सकते हैं. सो हमारे बीइंग अ स्टूडेंट, हमारे अंदर भी वो एक कीननेस होनी चाहिए कि मुझे एक अच्छा लॉयर बनना है, एक अच्छी एजुकेशन मुझे लेनी है. नाउ आई हैव टेकन मोर देन 1.5 hours, so I think I have to go to the some of the one of the before concluding, when the students comes in the profession after taking the degree, the stipend is one of the important aspect. The stipend dispensing attitude of the seniors. When the student register himself as a lawyer or as an advocate, there is a distinction between the lawyer and the advocate. Once we get the degree of the law, then we become the lawyer. But when we registered ourselves into the Advocates Act, then we become the advocate. So after registration under the Advocates Act, then we become the advocate and we have to join the senior. तो वहां क्या प्रॉब्लम आती है, सीनियर्स के पास जाते हैं, सीनियर काम कराते हैं, पैसे देते नहीं है. तो अब आज की डेट में हर स्टूडेंट ये चाहता है मैं कोर्ट में जाऊं और बस जाते हैं मुझे पैसे मिलने चाहिए. बट उसका जो दूसरा एस्पेक्ट है वो ये कि जो स्टूडेंट कोर्ट में जा रहा है और वो एडवोकेट जब बन गया है तो उसने अपने आप को उस कॉलेज लाइफ के अंदर इतना ट्रेन करने की कोशिश ही नहीं की है कि वो जाकर एक अच्छा लॉयर बन सके. अब वो जो जर्नी उसको स्टूडेंट लाइफ में शुरू करनी चाहिए थी टू बिकम ए गुड लॉयर, वो जर्नी वो शुरू करता है जब वो सीनियर के पास ज्वाइन करता है आकर, या आफ्टर रजिस्ट्रेशन एज एन एडवोकेट, तब उस जर्नी को स्टार्ट करता है. और वो एक बहुत बड़ा इम्पेडिमेंट है उसकी पर्सनल ग्रोथ के लिए. सो मेरी एडवाइस स्टूडेंट्स को तो यही है कि जब वो थर्ड ईयर के अंदर या सेकेंड ईयर में आ जाते हैं तो उसके बाद दे मस्ट हैव टू स्टार्ट लर्निंग more and more and more and start participating in the third year into the moot courts. So stipend मिलना चाहिए, but being a lawyer हमारा emphasize होना चाहिए कि हम बेस्ट एडवोकेट, गुड एडवोकेट कैसे बन सकते हैं, उसके ऊपर हमारा एम्फेसाइज होना चाहिए. वो एम्फेसाइज कम रहता है. इस लीगल प्रोफेशन की एक नोबेलिटी मैं आपको बताऊं कि अगर आपके पास स्किल बहुत अच्छी है और आप गुड लॉयर हैं तो क्लाइंट्स आपको ढूंढता हुआ आ जाएगा कि यार ये बहुत अच्छा एडवोकेट है, इसके पास चलो. एक जो प्रोफेशनली इक्विप्ड है
लीगली साउंड आदमी है या लीगली साउंड एडवोकेट है, उसकी बात खाली क्लाइंट ही नहीं सुनता, जज भी बहुत गौर से सुनते हैं कि ये जब बोलेगा तो ये लीगली करेक्ट बोलेगा, और लीगली साउंड आदमी है बहुत ज्यादा, और इक्विप्ड विद द जजमेंट्स है। करंट जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट का करंट ट्रेंड जो चल रहा है, हाई कोर्ट का जो करंट ट्रेंड चल रहा है इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, जिसके ऊपर आर्गुमेंट होने वाला है, उसके ऊपर ये लीगली साउंड है। तो Sir, ऐसे sir, जी sir, sorry to interrupt, sir. Sir, this is actually an interesting and session, but we have some time constraint. So, ओके, requesting तो you to विद इन 5 wind up, मिनट, sir. विद इन 5 मिनट्स। Okay, thank you, sir. तो जो लीगल प्रोफेशन है उसमें अपने आप को इक्विप्ड करना चाहिए विद द बेस्ट एजुकेशन, with the best knowledge, not only quite to the Indian context, but the other countries' Supreme Court judgment, High Court judgment, so that we can do the comparative study also. Then now come to the conclusion. The legal education is very much important for an individual, irrespective of whether he or she wants to pursue a career in legal field or not. मैंने शुरू में ही बताया कि रोड पर हम चल रहे हैं, हम गलत साइड पर गाड़ी पार्क कर देते हैं, तो ये कानून हमें ये कहता है कि हमें गलत साइड पर पार्क नहीं करनी, वो ऑफेंस है। गलत लेन में चल रहे हैं तो वो ऑफेंस है, रोड पर हम थूक रहे हैं वो ऑफेंस है। ये नॉलेज, ये लीगल नॉलेज हमें होनी चाहिए। हम एडवोकेट बने ना बने, बट हमें लीगली साउंड होना चाहिए, हमें कानून की जानकारी हमें होनी चाहिए। The experience to apply these rules, but on the other hand, as important it is to look at the aims and objectives of the legal education, the challenges and the hindrances in the legal fields cannot be ignored and the gap must be filled. कुछ गैप्स मैंने बताए हैं कि भाई ये इसके अंदर अपने को उन गैप्स को अगर हम कुछ कर सकते हैं, एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाने के लिए, अच्छा करिकुलम बनाने के लिए, वो हमें देना चाहिए। कॉलेजेस के अंदर एक ऐसे एनवायरनमेंट को क्रिएट करना चाहिए, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। आज की डेट में सॉफ्टवेयर बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं, और गूगल के ऊपर तो आप कोई जजमेंट्स अगर फ्री भी सर्च करना चाहते हैं तो फ्री सर्च करें, उनको पढ़ें, आप सिर्फ कीवर्ड्स डालें। कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं जो बिल्कुल फ्री जजमेंट्स आपको प्रोवाइड कराती हैं, जरूरी नहीं कि ऑन पेड होनी चाहिए, बट जो पेड होती हैं उनकी जो कंटेंट क्वालिटी होती है वो थोड़ी अच्छी होती है, जो उसके हेड नोट्स होते हैं वो थोड़ी क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे होते हैं। क्वालिटी एडवोकेट्स के थ्रू, प्रोफेशनल्स के थ्रू वो बनाए जाते हैं। तो मेरे आप सब लोगों को विशेष है कि आप कुछ अच्छा करें, और बेस्ट एजुकेशन और बेस्ट एडवोकेट कैसे बन सकते हैं, उसके लिए जो कर सकते हैं आप उसको अपने मन से ढूंढें कि मैं अच्छा और बेस्ट एडवोकेट कैसे बन सकता हूं। उसके लिए जो जो करना हो वो करें। और मेरी फिर आपको एक सजेशन है, मूट कोर्ट्स के अंदर मैक्सिमम पार्टिसिपेट करें, अपने छोटे छोटे रिसर्च पेपर लिख के 4-4, 6-6 पेज के टीचर्स के साथ डिस्कशन करें। देन यू कैन बिकम ए गुड लॉयर। वंस यू एंटर इनटू द प्रोफेशन, द सीनियर्स विल ऑलवेज welcome you because of your talent, your knowledge. Thank you for inviting me and giving this opportunity. Thank you, sir. Thank you, sir, for your interesting and motivating session. And this is really helpful for the upcoming lawyers. Sir, we have some queries here. So due to the time constraint, I am picking up some queries. So the first is from Anisha Sharma. That is, what is the morality under the area of legal field? Once you decided a fees with the client, then you should not extort the money from the pockets of the client. Number one. Number two, being a lawyer, you should have to give your best of your knowledge and your professional skill. So it is the part and parcel of the morality. Yeah. Okay. Thank you, sir. Next question is
from Yukti Sahai that please suggest some legal journals for fresh graduates of law. The AIR is available. You can go to directly to the court or the college library. Certainly, that must be available in your library. Or even directly, you go to the Google, search the judgments on the Google, type any keyword. Whatever problem comes in your mind, type the keywords of that problem, and you will certainly get the judgment and go through that judgment. And being a student of law, you take the oath today that not a single day when one judgment I will not study. Every day you must have to study a judgment, irrespective of any topic. Just read the judgment, then start thinking over that judgment and the law which has been discussed in the judgment. हर रोज एक जजमेंट जरूर पढ़ें, जैसे हम नॉवल की स्टोरी पढ़ते हैं, जैसे हम बाकी चीजों को जैसे टीवी सीरियल्स देखते हैं, फिल्में देखते हैं. Being a student of law, if you want to become a good lawyer, तो कसम खा लें आज ही कि रोज एक जजमेंट मुझे पढ़नी है. जी, next. Okay, thank you, sir. Now I request everyone to switch on the camera for photograph. Thank you everyone. So the feedback link is already shared in the chat box. All the participants kindly fill the feedback to get the certificate of participation. Next, I would like to invite Ms. Megha Soni, Assistant Professor of Law, IPM Law Academy, to propose vote of thanks to our eminent speaker. Over to you, ma'am. Thank you, ma'am. Good morning, all. I, Megha, feel immense pleasure to propose vote of thanks today. So, on behalf of the entire fraternity of IPM Law Academy, I extend my heartfelt gratitude to Advocate Rajkumar sir for his presence and remarkable contribution to make this webinar a great success. I would like to express my sincere regard to all my colleagues for making this event even a great success. I must thank for the team effort that was shown in the smooth conduction of the event. And last but not the least, I thank all the attendees for being with us today and making this event a resounding success. Thank you once again. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, ma'am. Please. Thank you, ma'am. Thank you, everyone. So thank you once again for joining us for this webinar. Have a great day. So everyone can leave the webinar. Thank you.